अब मैच है इनफाइनाइट ब्लास्टर वर्सेस एवीएम योद्धास। ये दोनों टीमों के कप्तान पिच में मौजूद है और इस मैच का टॉस होने जा रहा है। अंपायर रूल दोनों टीम के कप्तानों को समझा रही है, हमारे दरबी सर, जो कि बहुत अनुभवी अंपायर है, उनको दोनों ही कप्तानों को रूल समझा रही है। और थोड़ी देर में सिक्का उछाला जाएगा और हमें पता चलेगा कौन ये टॉस जीतता है। तो सिक्का उछाला जाएगा। तो इनफाइनाइट ब्लास्टर्स की टीम ने यहाँ पर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है एवं योद्धास के 11 ही खिलाड़ियों को क्षेत्र रक्षण के लिए। अब देखने लायक रहेगा, उन्होंने टॉस जीत के बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। और यहाँ पे खूबसूरत सा ये फोटो सेशन चल रहा है और हम अब जाएंगे स्पॉन्सर्स की तरफ। तब तक के लिए थैंक्स।
Welcome to Super Dads League 2022 Group B Match 4. It's between Infinite Blasters versus AVM Yodhas. Both the teams have won their first match of the league and coming head to head for the second match of the tournament. Infinite Blasters, after winning the toss, elected to bat first like they did in the first match. And Yogesh is on strike. Sanjay is on non-strike. Kostub to start the beginning for AVM Yodhas. Oh, that's a good ball, good line, good length, little bit of movement in the air. Super Dads League 2022 brought to you by Sportivity Ventures and One World of Sports. Please do follow our YouTube channel for more activities on cricket and many other sports. Oh, that's a good shot. Awkward bounce, but the fielder at mid-on did well to stop that. Sanju now comes on strike. He played a good knock in the first match of his team, and the team was off the mark with that single. Here we go, Sanjay. First ball of the new match on the leg side, and a good tap, and for quick single. Oh, that could have been quick, and it could be an overthrow, and yes, it is. So Sanju scored 5 runs in his first ball itself. Shy at the stump for the run out, but there was no proper backing by the fielding team, resulted in 5 runs. But I think they did well to take a shy at Yogesh's end, because star player from Infinite Blasters, he played superb knock in the first match. So it was a good attempt. Here we go. Fourth ball of the first over. Oh, that was over pitch. And good stop at mid off. Sanju is on strike now. Played well. Sanju is a very thinking cricketer. Takes his time to come into his groove, and then has the ability to hit one hand sixes. But the opposition team here is also a very good cricketing team, and this is gonna be some contest in this tournament. It's a good shot. Again, try for a single, but well directed by the non-strikers in. And here we end the first over of this second match of the tournament. I mean, for the day, not for the tournament. 7 runs from the first over. Apart from the overthrow, the bowling was well in line, well in control. So the bowler should not feel any heat of the extra 5 runs which he conceded. Yogesh on strike now. And we have Siva to continue with second over for his team. On the leg side, and it's a wide call by the umpire. Siva always rely on bowling
strict line and length. Not a full pace bowler, but good enough to keep the batsman guessing. Here we go for his first ball. Oh, that's a good shot. Very good shot. It was hammered in the vacant cover area, and Yogesh continuing his form from the last match, which he played at the very same ground. And it was wonderful shot. Ball was on a shorter side, and he took a great advantage of it. Gets his first boundary of the match. Score now reaches to 12 runs. Some change in the field now. Maybe they will have a deep extra cover. Yes, they're having a deep extra cover now. Considering the fielding restriction, only 2 players can be outside the 30-yard circle. Yogesh facing Siva. Wide delivery, so turning out to be a very good over for the batting team. Already moved to 13 runs, and with very less pressure, going at ease. Overthrows, 2 wides, and 1 short of length delivery, which was hammered for 4. The bowler should come back well to stop the run flow in this over. Well, that's a good ball. That's a good comeback by Siva. Slightly coming inside the delivery. I think that was his intention from the very first ball, trying to nip the ball inside. But it was executed well this time. Yogesh on strike. Short of length delivery, and in the air, it could be some catch if it's taken, but it was too far from the fielder. But they complete 2 easy run, and a very good throw, applauded by the batting team as well. So once we come to know the player who did throw that ball, we'll definitely let you all know. But it's very difficult commenting and knowing the fielders' names as well. Again, a tap in the mid-wicket area. Good batting by Yogesh. Last ball of the over, second over, and it was a full toss, and Yogesh taking full advantage of it, throwing that in the vacant mid-wicket area, and it was some good over. It was a very good over for the batting team, taking the score to 21. 21 from the 2 overs, and infinite blasters, like how they did in the first game, they are going aggressive from
the first go itself, and it's the same batsman Yogesh doing the trick this time as well. Third over of the match, and Sanjay this time learning how to score boundaries from Yogesh, and very well played shot in the cover area for boundary. Again, a good shot by Sanjay. He was attempting the same shot, but the ball was a bit on a fuller side. But nevertheless, change of strike, which brings Yogesh on the strike now. Yogesh has moved to 18 of just 9 balls, playing at the strike rate of 200. Kostup for his second over, and again trying to hike that in the mid wicket area, but completely missing it. It was fortunate that the ball didn't land up hitting the stumps. It was very close to the stumps. So a good comeback delivery by Kostup. Yogesh should take it easy. Still early days in the first inning. That's a very good shot for no run, but he middled it well. Good fielding at the point area. Trying to take that quick single. It could be a close call. Very good throw. Direct hit, but the batsman was quick enough to complete the run. Last ball of the third over. Score moving to 26 runs. So a very good start for Infinite Blasters. Sanjay on strike now. Was involved in a good partnership in the first match as well. And good shot, only for a single. But good connect by Sanjay, which will keep him on strike in the fourth over of this match. Score goes to 28 after 3 overs. Is there a change in bowling? Yes, it is. So change in bowling. Siva after the expensive first over gives opportunity to
Javed to come into the attack. Looking at his run up, looks like he's an off spinner. No, no, no. Bad guess. I said looking at the run up, so I was not sure on it. So Javed will try to stop the run flow for Infinite Blasters. Here we go, the fourth over of the first inning. Sanjay was strike. Sanjay was on strike and he thought it could be a wide ball, but it was well inside the line. And a good ball from Javed. Oh, first close call for the fielding team. And it looks like when the ball pitches on the wicket, it gets hold for a second, and it's not coming as quickly as expected. Over pitch delivery and good batting by Sanjay, giving strike to Yogesh, who looks in good touch. Few more fielding changes from Javed, looking at the batsman who is on strike. So now they have a mid-wicket player, a fielder in the mid-wicket area. Yogesh has scored 2 boundaries in that part of the ground, and they have a deep extra cover. 2 players outside the circle, mid-wicket, extra cover. Score moves to 29. Here we go. Fourth or third delivery. Again, a over pitch delivery flicked on the leg side, and it could be another boundary for Yogesh. Yes, it is. So Yogesh, continuing his good form from the first match, moves to 23 from just 11 deliveries. So although there was a player in the mid-wicket area, but Yogesh was smart enough to place that ball in the gap. Oh, that's a good shot. The player is placed there, so there will be only a single, but it was short of some authority, and the sound when the ball meets the bat was actually pleasing to the ears. Sanju now on strike. Sanju playing really well, really sensible cricket, not trying to be equally aggressive as Yogesh, but not losing on the opportunities which he's getting. And he doesn't have to, go for all aggressive approach, because there any which is 34 for no loss. It's only the fourth over. Appeal for leg before, but it was clearly missing the sixth stump. But a good over from Javed. Apart from that one boundary, it was a good over from the fielding team. Score now reaches to 34 runs. Kaustubh continuing with his third over. Kaustubh has considered 14 runs from his first 2 overs and looks to be the best bowler of
of the lot which we have seen right now. I am sure there are many good bowlers waiting to try their arms when the match move forward. But Costo bowling really well. His third over. Oh, that's a good shot. Again hammered in the vacant offside area for 4 runs. Very difficult to control these boundaries in power play overs. Score reaches to 38. And Yogesh taking full advantage of that delivery. When you have 2 players outside the circle, it's difficult to control boundaries like this. And when you have a batsman of Yogesh's caliber, it's more difficult. Second ball of the over to Yogesh. Oh, over pitch. And he was going to, his intention was to clear the long on 6, but ending up inside edge for only a single run. It was fortunate for Yogesh, the ball could have easily landed hitting the stump. So good comeback from Kostub. While the first ball was a short pitch ball, the second ball was aiming the stump. So luck is favoring Yogesh as of now. But the fielding team should try to ball deliveries which can result in wicket. Sanju now facing Kostub to Sanju. Good delivery, full length. Sanju missing a full toss. Could have been an easy single or two on the offside area. So there is no one controlling the leg side boundary for Sanju. Both the players are on cover and deep extra cover. And again trying to hit the ball in the cover area, but it has taken an outside edge and boundary for Sanju. I think it's his third boundary if I'm not wrong. So Sanju contributing with his bat in this partnership as well. And the score reaches 43 for Team Infinite Blasters. Sanju on 12. Batting really sensibly. So Kostub has considered 2 boundaries in this over. So after 2 good overs, it's not the right way to end for Kostub. Hope he has his plans well in check for Sanju. Here we go. Oh, that's a good shot. That was hammered, but there is a cover which fails to stop that, and it was short of some power from Sanju. Back-to-back boundaries for him. Oh, pitch delivery, offside, and boundary. For a moment, we thought that the deep extra cover will eventually cut it, but the shot has some power in it, and maybe any good fielder from any side would not have stopped that. Good shot from Sanju. Is he trying hat-trick of boundaries for his team? We'll come to know that in a second. Oh, lofted in the offside area for 2 runs. I think that takes the score to 49 from 5 overs. And it's scorching heat right now at Vensagar Academy, Mahul. It's very difficult for batsmen, for fielders, for umpires, for everyone to stand there and deliver in this really difficult hot and humid condition. But kudos to
all those who are battling out there, including the support staff of from Sportivity and One World of Sports. The umpires are also enjoying the drink break. Not the official drink break though. Javed coming up with his second over for the team. And team Finite Blasters going really well. They're not taking any risk. Still, they are scoring at 10 runs per over. Javed for his second over. Last over of the mandatory field restriction. This will be some ease for the fielding team, looking at the way the boundaries are coming. And when you have 4 players to stop the boundaries, it becomes difficult for the batsman also to hit at the will. Oh, solid defense. Last power play over, so Yogesh will also try to take advantage of it, but he have to be careful against Javed. Look, a smart bowler. Oh, that's a good shot for boundary. Very good shot from Yogesh. That takes the team score to 53. So 6th over going on. So the power play yet to be done, but the batting team has reached 53 inside the first 6 over. Here we go, the third ball of the over. Yogesh trying to take. Oh, what a good shot it is, and a very clever shot. The wicketkeeper is giving a chase to it, but that will go in vain. And it was good flick of wrist at the right moment by Yogesh. While there was no one covering that area, no fine leg, no short fine leg, and it was a very sensible cricket shot by Yogesh. No power, only touch. So Yogesh showing all his skill sets here. Power, solid defense, good flick. Here we go. Next ball of the over. He tries to hike that in the mid wicket area, but lucky enough to get an inside edge to the boundary, and a difficult chase to the fielder out there. And what a good batting by Yogesh. I think he has taken the game. He's trying to take the game away from the fielding team. And if what we have seen in the first 6 over, and if he continues batting like this, I think it would be very difficult for AVM to come back into this match. But let me remind you all, AVM is a solid team, and I'm sure they have their plan B, plan C ready for any kind of situation, and they will come back strong. But at the moment, let's enjoy Yogesh's batting with a good support from Sanju at the other end. Oh, whoa, what a shot! What a shot! Opening the face of the bat at the very last moment, Yogesh. And that's 3 back-to-back boundaries. But I think this was 4 back-to-back boundaries. But this was the best, at least, in my eyes. Keeping the eye on the ball at the very last moment, and just as it was reaching the wicketkeeper's gloves, he opens the face of his bat for 4 runs. Very good batting by Yogesh. And it is yet another boundary, which is 5 boundaries from this over. So
all those who are watching right now on YouTube. This tournament brought to you by Sportivity Ventures and One World of Sport. Super Dads League 2022. Request you all to download the Sportivity app for all the live scores and all the updates related to sports, specifically on cricket. And after finishing the first 6 over, Infinite are on 69 runs. Mahesh into the attack after the end of power play for Team AVM. Score is 59 from the first 6 overs. And the batting team would be super proud of their performance from the first power play. Yogesh on 49 from 22 balls. Those who have joined us right now, you have missed a superb batting by Yogesh in the last over where he hit 5 consecutive boundaries to Javed. Here we go, we have an off spinner now, and this track is known to suit 2 spinners. So let's see how the match turns up now. Oh, trying to cut the ball, Sanju in the third man area. Sanju playing really well for his 18 runs from 14 balls. And it's a wicket. As I just mentioned, the spinners do enjoy their game in this ground on this wicket. But a very good batting and a very good partnership ends here for Infinite Blasters. And Sanju departs after scoring 18 runs. But you should also give importance to the partnership which he was part of, like the first match. And we have new batsman. So we have Sharad to take strike. So Sharad Suvarna taking strike. So some opportunity for Team AVM to come back in this match. And a very good ball from Mahesh for first wicket. His first wicket as well as for his team. Oh, so it was very close. 3 good deliveries. And it's really difficult for the new batsman to adjust to the pace of the wicket, especially when he's facing spinners. And it's a wide delivery. So the score moves to 70 after 6.3 overs.
Infinite blast off, losing 1 wicket around 70 after 6.3 overs. Mahesh to ball his fourth ball over pitch and tapped it on leg side for an easy single. So that brings Yogesh on strike. He's on 49 of just 22 balls. I'm sure scoring or getting 50 is not in his mind, but it would be good if he gets there. Solid defense by Yogesh, and what good over this is by Mahesh. No loose deliveries, and the runs have stopped literally in this over. Over pitch draw, offside area, some work for the fielder, which he fails to do. And that's a very good 50 for Yogesh, his second 50 of the tournament. And what was a good over for the fielding team ends up in the boundary. And Yogesh using all his power, all his skills, placing the ball over point region for boundary. Good to see the wicket keeper congratulating Yogesh for his 50. It's a good sportsmanship by the wicket keeper over there. So the score moves to 75 from 7 overs, and we have a new bowler to continue the 8th over for AVM Yodhas, and Siddharth comes into the attack. Siddharth with his off spin, leg spin. Oh, it's very difficult to do a guesswork over here. I may require help from the umpire to tag the bowler. But Siddharth, and some confusion going over there in terms of the number of fielders allowed after power play. Team AVM playing with only 10 players. Oh, that was a wonderful shot. Wonderful shot in the cover area. Yogesh is not interested on the number of fielders on ground because nobody can catch that if it's a 6. So even if we have 10, 11, 12 players on the ground, it doesn't matter for Yogesh at this moment. And this was a very good shot. Inside out shot over cover for 6 runs. I think the non-striker is also enjoying the batting from the best seat in the house. And we have a problem. For those who missed
the live viewing of that super six by Yogesh. We just played a replay for you all. Here we go. Yogesh on strike. Same delivery, but this time he checks the shot. But what a beautiful shot this is in the same area, but not going over and above for this attempt. Gently plays that in the gap for 4 runs. Yogesh moves to 59 now from 25 balls. 63, I'm sorry. So Siddharth must be thinking what he's going to do next. Will there be a change in fielding position? Lot to think for team AVM Yodhas and for their I'm so sorry. Oh, that's a good shot. Same area, and this is another good shot for 6 runs by Yogesh. They're already a play shot team AVM Yodha, but the way Yogesh is taking charge on the bowlers, it's very difficult to stop him with 20 players on the field as well, because he's hitting sixes at his will. Very good batting by Yogesh. I hope all of you who are watching it live are enjoying it equally like how we are doing it from the ground here. Siddharth to Yogesh. Quicker delivery. It's a good ball. Oh, and that was not expected by the fielder over there at the long on boundary. But the flow of run continues for Yogesh and team Infinite. So mistake by Siva at the boundary, costing 4 runs to the team. It's a wide delivery, and it could again reach the boundary. The wicketkeeper has some chase to do, and Yogesh coming it for 2 runs. So 3 from this ball, which eventually will not be counted. And is this the most expensive over of the inning? .24 from the over, and we have 1 more ball to go. Oh, it's a good shot. Some work for Siva now. And boundary to finish the over. What a good batting by Yogesh. 28 runs from the over. 28 runs. Just 5 minutes ago, I was mentioning how spinners take the advantage of the pitch. But when you have a batsman like Yogesh, it's really difficult to control the flow of run, and the score reaches 103 after 8 overs. 28 runs from the over. I'm sure the captain has a lot to think on who will continue the bowling to support Mahesh, who bowled well to take the first wicket for his team. Team AVM expecting Mahesh to help them with their second wicket, and Mahesh also trying to keep his fielders at the right position as per his bowling plan, and they should try take the advantage of the new batsman who is on strike now
fortunate for them that Yogesh is at the non-strike end, and I'm sure he's going to take full advantage of the off-spin bowling when he comes on strike. But as of now, Mahesh bowling to Sarat. Mahesh with his second over, and that's a good sensible batting, tapping it on the leg side for a single, and they were planning for two, which I think is not needed when you have Yogesh in the red hot form, and when he can hit the inside out boundaries of six so well. It would be interesting to see how he takes on a bowler who is bowling off spin. Team AVM Yodhas looking for wickets. Not much noise going there. No cheering for the bowlers. It's very difficult to do that when the opposition is scoring so freely. Oh, that's a good ball. Oh, that's a very good ball from Mahesh. He's very particular on the spot. He's pitching the ball, and it would be interesting battle this Mahesh versus Yogesh. Over pitch ball, and it's boundary. Oh no. And yes, it is. So we will require the umpire's help to understand what happened at the long off boundary. But I'm so sorry to be so early in predicting that shot. But it was only for a single. Good stop by the player at the long off boundary. Sarat on strike. And that was not needed when you have Yogesh playing so well. But what a ball and what a over from Mahesh. I think he's the only one from the bowling unit. And the umpires have also called for drinks. Uh, and it would be some breather for the fielding team because it's really hot and humid out there, and it's very difficult for players to field in such a challenging situation. And we are going to have a drinks break now, so I'm also going to take a small tea break, and we'll come back live on commentary once we resume after the tea break.
New batsman for Team Infinite Blaster. We lovingly call him Sundaresh, known for his 6 hitting abilities. And if he and Yogesh come to their full strength, this is going to be some batting and some joy for people watching this live. But Mahesh, what a good bowling. 2 wickets. And he's yet to finish his second over. Oh, again a good ball, and that's what I mentioned. He's very particular on the spot. He's pitching his deliveries. No fear of going for a hit or for a 6. He's flighting the ball really well. And good placement. So 105 after 9 overs, losing 2 wickets. Going well, Team Finite Blasters in this Super Dads League 2022, brought to you by Sportivity Ventures and One World of Sports. Shiva to ball his second over. Score moves to 105 after 9 overs, so they are scoring over 10 runs in an over. And if we need the accurate answers for it, so the run rate at which Infinite Blaster is scoring is 11.66. So that's a very, very, very handy run rate to be at. I mean, the position they are after 9 overs. Shiva once again for his second over. Oh, that's a good shot. And Geelong off fielder missing it completely. Not able to judge the bounce of the ball. An easy boundary for Yogesh. There will be awkward bounce, but you should be ready for all such things when you're fielding in those critical areas. Next delivery from Siva. Very good delivery. Sundaresh is trying for 2, but I think Yogesh don't want to waste his energy for taking a risky 2. And I'm sure he has full faith in Sundaresh's batting ability as well. But a good comeback delivery after considering the 4 runs in the first ball. Shiva for his third ball of the over. And Sundi playing it well. He's taking his time. He has enough buffer to consume all these deliveries here, because as I mentioned, they're going at 11.66 runs per over. So he can take all his time in the world to get settled here and then show all of us his 6 hitting ability. Shiva to Sundaresh. It's a shot in the vacant fine leg area for boundaries. So that's a good way to open the account for Sundi. And the fielder over there looks very tired, because he's the one who relentlessly goes to collect the ball once it crosses the ropes. And there's no helping hand for him. No spectators near the boundary rope to help him. Here we go. Back to the Shiva's over. It's a wide delivery. The score reaching 116. And we are yet to finish our 10th over for the first inning of this match. 2 balls to go. 115 for 2. Oh, that's a good shot from Sundaresh. Very good shot for boundary. And when the batting team in
is in such a red hot form and you are fielding with 10 players, it becomes equally difficult for the bowlers to stop the flow of runs. But Mahesh is doing a very good job from the other end. He's not getting support from the other bowlers from the team. But should not take the team AVM Yodhas lightly. I'm sure they have enough depth in their batting as well when they will come on bat. Plus, we have still half of the first inning over to be completed. So there's a lot of time left to conclude anything for this match. But Sundaresh, two back-to-back boundaries. Oh, that's a good shot, but straight into player's hand. Will they go for a second? Which I think they will not. A very good throw. One bounce straight into the bowler's hand. Score reaches 120 after 12 overs. And for someone who is poor in mathematics like me, now I can calculate the run rate without my scorer's help. So it's 12 runs per over. So they've considered 7 extras, team AVM Yodhas. And here we have a bar chart scoring, giving an idea about the flow of runs per over. I think it was the 8th over which was the costliest one, 28, when Mahesh is continuing his 3rd over. Super Dads League 22 brought to us live here on YouTube by Sportivity Ventures and One World of Sports. Do download the app of Sportivity Ventures for live scores and all the update on cricket matches. And as we finish over number 10, we are switching the sides. Earlier we were playing from the other end, so we are yet to name the ends over here, but we have shifted to the other end. Mahesh to continue his 3rd over, and is being some bowler for his team. Mahesh giving them 2 wickets. Sundaresh on strike. Oh, that's a full toss, and it's 6 runs. I think it was 6 on any ground. So this boundary ropes here are not that short. So it takes some batting and some power by Sundaresh to take that ball outside the boundary rope. This is his first 6. As I mentioned when he came to bat, he's known to hit big 6s. What I've heard from his teammates, while the others come at practice for 7 a.m., he comes at 6 a.m. to practice hitting 6s. And all his practice, early morning practice, is giving him good benefit for improving his game. Mahesh, what he has in plan. Oh, that's a miss by the wicketkeeper, and he's going for a chase, but it's a boundary. So hard luck for the bowler, although it would not be considered in his account, but it's a loss of 4 runs for the team. Wicketkeeper, who is doing a good job till this moment, failed to grab that delivery, which was missed by Sundaresh as well. So
I don't want to be too harsh on the wicketkeeper here because he has done a good job uh, till this point, and one rare slip is okay. Oh, very well played, very well played. That's what all the commentators on the international stage always speaks about. Hit the six and take the single. You know, gives the other batsman an opportunity to be on charge, take the charge, whereas you go to the other end, gives the opportunity to think as well on how the game is heading. But at this moment, I think Team Infinite Blasters are on roll, 131 runs from 10.3 overs, and they are going superbly well. Full toss delivery on the leg side, and this is another boundary for Yogesh. So it's very difficult right now for Team AVM Yodhas when they're fielding here with 10 players and with the batsmen in such a good form. And to the pity, it was a full toss, and the batsman like Yogesh will take the full advantage of it. Mahesh was so good in his first 2 overs, slightly losing his control, but I'm sure he's a good bowler. He's taken 2 crucial wickets for the team, and he will have his backup plans for the good batsman. Oh, that's a good shot, and it's coming straight to me. Watch, 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 watch. Oh my god, it was a monstrous six by Yogesh. And for a moment, oh, look at this. Straight towards the commentary end. And it was a monstrous six by Yogesh. Takes him to 93 in just 35 deliveries. Oh, what a batting from Yogesh Wagh here. Pleasing to everyone to watch here on ground, on live itself on YouTube. And again, as I was mentioning, 10 players on the ground, not making any good for the fielding side. And Yogesh moves to 97. And the score moves to 145. Lot to think for Team AVM Yodhas on their comeback strategy for this match. The players the umpires are not happy with the frequent drink breaks taken by both the teams here, and that's right as well, because we have a time limit to finish the match, and it requires a lot of discipline by the players and equal discipline by the umpires as well to control the frequent drink breaks so that we can finish the match well in time. Sundaresh on strike now, and he has moved to 16 from 9 deliveries. The score is 145. We have Saurav to continue the bowling with his first over. And Saurabh Sinha coming up with 12th over. Am I correct? 12th over, right? 12th over for his team. Getting assist from Javed for field positioning. I'm sure now Team AVM must be thinking on how they can come back in this match. More from the batting than from the bowling, because I think we have seen all the bowlers apart from Mr. Sinha, but no one looks of any danger to Yogesh as of now. And
Now we also have Sundaresh to partner Yogesh in the competition of 6 hitting. So Sundaresh on strike. How many sixes we have in this first inning? Oh, that's a good shot. That's a good shot and straight into the hands. What a good change. What a good bowling change and a man with golden arm. So Saurabh getting success on his very first delivery. Sundaresh going for a 6 over on the leg side. And Arvind, the new batsman, now on strike. And it was quite unfortunate for Sundaresh to miss that opportunity. And Arvind is the new batsman. So Arvind now on 97. Yogesh on 97 facing Saurabh. Oh, that's a good shot. And well, Arvind thought it's a easy single on the offside. Well instructed by Yogesh for not going for any risky singles. Oh, that's a good delivery from Saurabh. And a very good shot, easy shot by Yogesh that takes him to 98 runs. Arvind now on strike. Handy batsman Arvind plays well in on offside, and this is turning out to be a very good over by Saurabh. He's conceded only 1 run from his first 4 deliveries, taking a wicket of Sundaresh, who could have been a deadly batsman. Again, a very good ball by Saurabh. So it's a very rare sight in this first inning so far, where we are having only 1 run of the over. Last ball of the over coming up, and again it's a very good delivery. So after 12 overs, the score is 146 for the loss of 3 wickets. And what is required right now for Team Infinite Blasters is someone who can stand along with Yogesh as of now, because he is scoring uh, at his own will. He has reached to 98 now, just from 36 deliveries. And from last 8 overs, I think the batting team will be looking for at least 65 runs, which will take the team score easily above 200. That's the bare minimum the batting team should look out for when they're at 146 for 3 after 12 overs. Oh, that's a good shot. And it's a boundary, and it's a 100 by Yogesh. What an inning this is! What a player he is! 100 from Yogesh,
I'm sure he's making his team proud of his batting, but there was not a good attempt at the long on boundary by Javed. And Yogesh now 3-figure 100 runs. Oh, that could be a no ball, but he has taken full advantage of it for a boundary. It could be a free hit as well. And yes, it's a free hit, being a no ball. And just when AVM had such a good over for the team by Saurabh, the follow-up over by Amar is not going as planned for them. It's a free hit. And here we go again. One more monstrous six by Yogesh. And what a batting it is. Beautiful shot for 6 runs and taking full advantage of the free hit. Score reaches 161. And Amar has conceded 15 from his 2 balls. And here we go, 16 from his 2 balls now. Good stop by the wicketkeeper. He's been good behind the stumps throughout the part of the first inning which has been done. And team AVM Yodhas are giving runs like anything. And oh, that's a very good tap on the leg side for an easy single. He will get some time to relax, take some good deep breath, have his energy back when Saurabh comes to ball his next over. I'm sure Yogesh will try to take advantage of his good form when he faces Saurabh Sinha. And it's a wide delivery. So Amar, after taking the wonderful catch to dismiss Sundaresh, disappointing a bit on his bowling. And that's a wide delivery. And it's 19 from just 3 balls. So team score reaches to 165 for 3 wickets. And Amar needed to bring back his discipline, line and length bowling. Again, a boundary, and I think he's not confident to continue the over. He's taking himself off. And it's unfortunate for team AVM Yodhas. But hard luck, Amar. And the umpires have requested Amar to continue the overs. I think that's not allowed as the part of the rules of the game. And it was good thinking by the umpires at the moment. And that's a good delivery by Amar. And Arun is off the mark with that shot. And it's always a pressure release situation for any batsman to score his or her first run. Again, a wide delivery. The fear of those monstrous sixes and some entertainment for us by the umpires.
Amar to Yogesh now. Oh, that's a good shot for 2 runs. That's easy 2 for the team Infinite Blasters. Amar has considered 24 runs from his 5 balls. Here we move to his last ball of the over. And that was a good ball to finish the over. Score reaches 170 after 13 overs. And Yogesh now moves to 115. Arvind partnering him well by scoring 1 of 4 deliveries. But what is required at this moment is support to Yogesh. Score reaches 170. Saurabh, the other wicket taking bowler for Team AVM Yodhas, continuing his second over. Saurabh to Arvind. That was the same area Saurabh ball to Arvind the last over, and that resulted in 3 dot deliveries. He's continuing the same spot. Very smart bowling from Saurabh, and good support by the wicketkeeper behind the stumps as well. And this time he's slightly off the target, and it's one more wide, and umpires too enjoying the batting of Yogesh over there. Saurabh to continue. Oh, that's a good shot. That's a good shot, and what an attempt by Saurabh to stop that. And such stop could be very risky as far as injury is concerned, but Saurabh is not at all thinking on that line at this moment. He wants to save each and every run for his team. That's a very good attitude by Saurabh. Oh, what a shot! What a shot by Arvind, and what sound it make when the ball hits the bat, and backed up by very good running as well. So Yogesh keeping up his energy on high as well, supporting the batsman also, and we have some confusion on the fielding position, but that's over now. Oh, that's a good shot. That's a good shot. Well flicked. One bounce to Javed, and he does a good job this time. And it's only a single for Arvind, who moves to 4 runs. Saurabh to continue to Yogesh. Oh, that's a good shot. That's a good shot, but there is a player to cut that off, and he easily collects that for a single. And we have last delivery to go from this over. Arvind on strike, and work for umpires, and they are enjoying it as well. Score reaching 176 for 3. Oh, that's a good shot. What a good shot. What a good flick. Sad part that it's only for a single, but it was a very good flick by Arvind.
which will keep him on strike at the beginning of the next over. 77. So we have our proud sponsors for this league, Gear Up Sports. Anything on your cricketing gears, not only cricket but any sports, Gear Up Sports is the place for you all. This tournament brought to you by Sportivity Ventures and One World of Sports. Super Dads League 2022. Shrikant. Siddharth now coming for his second over. He gave 28 from his first over. Let's see how Yogesh takes him on in his second over. And he charged down the track, but controls the shot only for a single. He is eager to come on strike, but it was not possible at this moment. Yogesh gets the single. Arvind on strike. So very good bowling from and Siddharth with his second over of the match, trying to hit that in on the leg side. I'm sorry, gets the toe edge of the bat only for a single. So Yogesh now trying to take advantage from the momentum which he was enjoying in the first over. Oh, I think that was an outside edge. And Yogesh is getting instruction from his teammate from the batting camp to play full innings. Pura khelenge, pura khelenge. And that's a good shot for a single. That was way wide. And Yogesh using his skills to put that ball in the hands of the long on fielder. And Arvind gives an easy catch to Javed. And Siddharth gets his wicket. And good catch by Javed. Sometimes it gets really difficult to judge the skiers, but at the end some happy moments for the fielding team, and it's nice to see they are enjoying the success of Siddharth, who was taken for a toll by Yogesh in his first over. And we have new batsman on the crease now. Umpires requesting the fielding team to take the field position quickly as we are behind the schedule. Ashish Gangwal, the new batsman, to accompany Yogesh, who is standing like a rock, holding one hand. Not only holding it, but he is holding the entire inning for Infinite Blasters. The team has scored 180 runs, of which 118 belongs to Yogesh. So that's the power, or that's the impact of his inning in this match. We have done with 15 overs, and the score has now reached 180. So last 5 overs, and
I think this is gonna be some run fest now, because Team Infinite will try to take advantage of the powerful position they are in, and will at least try. There is some interesting commentary going on from the umpire's end, which unfortunately we cannot put it live, but that was interesting. Here we go, Saurabh into his third over. Saurabh is the most economical bowler from AVM's team, and but he starts with a wide. So it is not a wide delivery, it's a fair delivery, as it touched the batsman pads. Here we go. Oh, that's hammered. I think he'll go for a second. So very good running by Ashish, which made the two possible. Yogesh still high on energy and looks very calm, very composed at 119 currently. Oh, that's a good shot. Straight into Javed's hand. So good bowling from Saurabh when the opposing team is scoring at over a 10-12 per over. He's bowling at 4 per over, and I've only considered 2 from. तो थैंक यू गुरु सर, आप सुन रहे थे गुरु सर को। अब आशीष वाघ ने जो कि सेंचुरी चढ़ चुकी है, इस बार पीछे की तरफ खेला और ये एक खूबसूरत सा शॉट, 4 रन मिलेंगे आशीष के बैट से, खूबसूरत सा चौका मिलेगा। सो इसी चौके की बदौलत स्कोर होगा 187। रनों की बौछार कर दी है आशीष ने, योगेश ने, जो भी बल्लेबाज आए थे उनके सभी सफल रहे। इस बार खराब गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और वाइड बॉल पे 1 रन दौड़ेंगे तो 2 रन मिलेंगे। वाइड +1 से स्कोर हो चुका है 189 रन। सौरभ सिन्हा अब तक का सबसे बढ़िया स्पेल रहा है सौरभ सिन्हा का। इन्होंने अब तक तीसरी ओवर ये डाल रहे और केवल 17 रन खर्च किए। बाकी हर एक बॉलर एक्सपेंसिव, लगभग 20+ रन हमने अभी तक खर्च किए हैं। इस बार हवा में खेला है योगेश ने और मौका दिया यहाँ पे, और बहुत ही खुशी वाला पल यहाँ पे। सौरभ सिन्हा ने आखिरकार कर दिखाया और चलता किया यहाँ पे। योगेश वाघ जो कि बहुत ही इनफॉर्म बैट्समैन थे, 121 रनों पे उनको आउट कर दिया। अगर ये बैट्समैन और लास्ट तक टिकते तो बहुत ही हानिकारक था, और ये बहुत ही बढ़िया। सब तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे। 52 गेंदों में उन्होंने बनाए 121 रन, जिसमें 18 चौके और 4 शानदार छक्के उन्होंने लगाए। आप देख सकते किस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा, बहुत ही अच्छा। 232 का उनका स्ट्राइक रेट है, बहुत ही सराहनीय परफॉर्मेंस है। सभी प्लेयर उसका ताली बजाकर स्वागत कर रहे
अब जाएंगे नए बल्लेबाज। न्यू बैट्समैन नेम, न्यू बैट्समैन नेम। प्रणव सोपारकर आए हैं इस बार नए बल्लेबाज। तब 116 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 189। प्रणव आया है और इस बार देखते हैं कौन करता है गेंदबाजी। सिद्धार्थ कंटिन्यू करेंगे। साइड पे कौन खेल रहा है? प्रणव खेल रहा है ना साइड पे। हाँ, पूछो। और वाइड गेंद का इशारा इस बार अंपायर द्वारा, वाइड बॉल का इशारा, और इसी वाइड के साथ स्कोर हो चुका है 190। जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा भी धीमा हो गया है। इस बार वाइड बॉल को छेड़ा, लेकिन सही छेड़ा और इसी के साथ 4 रन मिलेंगे। जी नहीं, फील्डर वहां पे मौजूद है तो 2 रन, 2 रन लेने में कामयाब। 2 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 192। फिर एक बार सुपर कट, लेकिन उसी दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद है तो 2 रन लेने की कामयाब कोशिश और आसानी के साथ 2 रन पूरे। इसी के साथ स्कोर है 194। प्रणव सोपारकर और आशीष दोनों ही नए बल्लेबाज है। इस बार खराब गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और फ्री हिट है बॉल। देखते हैं प्रणव किस तरह फेस करते हैं, इस फ्री हिट का सामना करते हैं। और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस बार आगे आके खेलने की कोशिश, गेंद जाएगी सीधी हाथों में, लेकिन 1 रन लिया और 196। अच्छा कैच यहाँ पे, लेकिन फ्री हिट था तो कोई मतलब नहीं इस कैच का। प्रैक्टिस हो गई अच्छी कैच की। फिर एक बार जबरदस्त शॉट था खेला है और लगातार उसी दिशा में 2 रन हासिल कर रहे। इस बार आशीष ने 2 रन हासिल किए। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। 198 स्कोर हो चुका है। ओ नो, फुल टॉस गेंद थी, छू के यहाँ पे और आउट करा दे दिया अंपायर ने। एलबीडब्ल्यू के शिकार हो चुके हैं और आशीष को चलता किया सिद्धार्थ ने, एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए। हम रिप्ले जरूर देखेंगे। ये देखिए किस तरह से आउट हुए। बॉल बिल्कुल पैड पे लगी और आउट घोषित कर दिया अंपायर ने और आशीष को वहां पे वापस जाना पड़ेगा। अब आए हैं नए बल्लेबाज मयूर। मयूर घाग आए हैं नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पे खेलेंगे। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष है। एक बॉल बाकी है। 198 स्कोर हो चुका है।
देखने लायक रहेगा अभी ये मुकाबला किस तरह से रोकते हैं ये गेंदबाज, क्योंकि ऑलरेडी स्कोर बहुत हो चुका है, लेकिन फिर भी ये गेंदबाजों के हाथों में है कि अभी भी रोक लगाई जा सकती है। फुल टॉस डिलीवरी इस बार, और बॉल को भेजा है सीधा बॉल लाइन की तरफ, और वहाँ पे फील्डर मौजूद, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलेक्शन, और इसी के साथ 2 रन पूरे, और ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 200। इसी के साथ 17 ओवर समाप्त हुए और विकेट गए हैं 6। सौरभ सिन्हा जो कि सफल गेंदबाज रहे आज के दिन के, 3 ओवर में उन्होंने 2 विकेट चटकाए, और जो महत्वपूर्ण विकेट था योगेश का, अपने ही फॉलो थ्रू में उन्होंने उनका कैच लिया। सौरभ सिन्हा एक में सफल गेंदबाज रहे हैं एवं योद्धास की टीम के। इस बार प्रणव के लिए डालेंगे ये सौरभ, और ये देखिए अपील की थी यहाँ पे, और अच्छी गेंद है, वाइट बॉल का इशारा नहीं अंपायर का, तो ये अच्छी गेंद है। डॉट बॉल, स्कोर रिमेन्स सेम, स्कोर है 200। और ये देखिए कितना बढ़िया प्रयास और सफल, ये देखिए कितना बढ़िया, हवा में बॉल था, लगभग लिया अपने हाथों में और चलता किया यहाँ पे अरविंद प्रणव को। सिद्धार्थ ने ये खूबसूरत सा कैच पकड़ा था और चलता किया यहाँ पे। और इस बार आए हैं गुरुनाथ जो कि कमेंट्री कर रहे थे, एक छोर से कमेंट्री का जिम्मा जिन्होंने संभाला था। गुरु जो भी कमेंट्री में बहुत ही अच्छी जिन्होंने कमेंट्री की थी, और सभी जो भी हमारे व्यूअर्स है सबका मन जिन्होंने एक थाम के बैठे थे सभी प्रेक्षक, वो सब अभी गुरु की बल्लेबाजी देखने के लिए उत्सुक है। इस बार स्ट्राइक पे है मयूर, और वाइड गेंद का इशारा यहाँ पे अंपायर का। काफी लंबा रहा ये सफर इस इनिंग का। फिर एक बार खराब गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तो अंपायर अभी थोड़े से नाखुश, क्योंकि उनको लगातार वाइड बॉल के लिए दोनों हाथ फैलाने पड़ रहे। सौरभ सिन्हा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे, क्योंकि विकेटों की दरकार है। 7 विकेट लेने में सफल रही अब तक ये टीम। इस बार पीछे की तरफ खेला, सीधा 4 रन मिलेंगे, और इसी 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 206 रन। ये देखिए किस तरह की पीछे पीछे की तरफ धकेल दिया, और 4 रन हासिल किए अपने टीम के लिए। तो मयूर का ये खूबसूरत सा शॉट, छह रनों पे खेल रहे अपने निजी स्कोर पे। अब गुरुनाथ है नॉन स्ट्राइक पे। इस बार हवा में खेला, फील्डर वहां पे मौजूद था। और
और कप्तान ने ये कप्तानों वाला काम कर दिया है, खूबसूरत सा कैच ले लिया है। चेतन कपूर का ये खूबसूरत सा कैच, और मयूर को यहाँ पे वापिस जाना पड़ेगा। विक्रांत पठारे इस बार जाएंगे। अब ये बहुत ही देखने लायक रहेगा, क्योंकि आखिर के कुछ ही ओवर बचे हैं, और ये बहुत ही अच्छी वापसी की है इस एवं योद्धास की टीम ने, क्योंकि योगेश ने ही अकेले ने 121 रन बनाए और उसी की बदौलत टीम इतना स्कोर बना सकी। बाकी प्लेयर्स का भी योगदान है, लेकिन सबसे बढ़िया जो बैटिंग थी योगेश वाघ की। अब धनंजय, माफ कीजिएगा, विक्रांत पठारे आए हैं जो कि स्ट्राइक पे खेलेंगे। और इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष हैं। टू टू गो फ्रॉम दिस ओवर। विक्रांत आए हैं। विक्रांत पठारे, और इस बार बोल्ड कर दिया है, और सौरभ सिन्हा को ये और एक सफलता मिलेगी। देखिए किस तरह से आउट किया है विक्रांत को, आते ही चलता कर दिया। और अब 5 विकेट हो चुके हैं सौरभ सिन्हा के, अकेले ही। मितेश आए हैं इस बार, मितेश पटेल, और बहुत ही खुशी का माहौल है एवीएम उदास के टीम में, क्योंकि अकेले सौरभ सिन्हा ने 5 विकेट चटका दिए हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि टीम ने 200 कप का बना लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप उस टीम को अगर ऑल आउट करते हो तो एक बढ़िया खुशी आपको मिलेगी, और एक बॉलर ही जान सकता है एक किस तरह की खुशी है ये। सौरभ सिन्हा 5 विकेट उन्होंने चटका है अब तक, और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर एक बॉलर उनका जब मार खा रहा था बॉलिंग के ऊपर, तो ये अकेले ही लड़ रहे थे, और अकेले ही मतलब सबका विकेट लेते लेते अब तक 5 विकेट उन्होंने चटका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी गेंदबाजी मैं कहूँगा, नहीं तो अदरवाइज ये 200 प्लस ऑलरेडी कर चुके रहते। डॉट गेंद इस बार, और अपना पगड़ा अभी कस रहे पूरी तरह से। 18 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 206। अभी भी 2 ओवरों का खेल आना बाकी है, और हम देखेंगे। तो सौरभ सिन्हा ने अपना 4 ओवर का स्पेल पूरा किया और 5 विकेट चटकाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट थे, जिसमें योगेश वाघ का विकेट उन्होंने चटकाया। बहुत ही सराहनीय, प्रशंसा करने वाली इनकी जो कामगिरी रही है, जो परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही अच्छा। अब इस बार आए हैं गेंदबाजी के लिए महेश बियानी आए हैं इस बार। महेश बियानी में शुरू शुरू में जो उन्होंने ओवर डाला था वो भी सफल रहे थे, लेकिन योगेश में उनका जो आक्रमण था उस पर हल्ला चढ़ाया, और जो भी उनका आक्रमण था पूरा लूज कर दिया। महेश बियानी, गुरुनाथ है इस बार स्ट्राइक पे।
खो लिया है इस बार 1 रन के लिए। स्कोर हो चुका है 207 रन। मितेश पटेल आएंगे इस बार स्ट्राइक पे। पीछे की तरफ खेला था ये, और 1 रन मिलेगा। दूसरे रन की मांग नहीं है, तो इसी के साथ स्कोर हो चुका है 208। अब गुरु आए हैं स्ट्राइक पे। ये लिया सिंगल, और स्कोर कार्ड में 1 रन से बढ़ोतरी। स्कोर हो चुका है 209 रन। महेश बियानी, जिन्होंने 2 विकेट चटकाया है। खूबसूरत सा ये बॉल, कोई रन नहीं। डॉट बॉल इस बार। एक और एक बॉल बाकी है अभी भी इस इनिंग का। ये देखिए कितना बढ़िया करारा जवाब दिया है आखिर में। शानदार सा चौका जड़ दिया है ऑफ साइड की दिशा में, और मितेश की बैट से ये खूबसूरत सा चौका। इसी के साथ 19 ओवर की समाप्ति। स्कोर हो चुका है 213 रन। और आखिर का ओवर है, देखते हैं कौन आते हैं आखिर का ओवर डालने के लिए। कौस्तुभ गुप्ते आए हैं। कौस्तुभ गुप्ते का अगर स्पेल देखा जाए तो उन्होंने 3 ओवर में 29 रन खर्च किए थे। गुरुनाथ गौड़ी है अभी स्ट्राइक पे, और कौस्तुभ बॉलिंग करेंगे। रियरशिप खेलने की कोशिश, छू के यहाँ पे, और ये बिल्कुल ही बढ़िया। अभी रन हो चुके हैं तो कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं गुरु। खूबसूरत सा ये स्ट्रोक था। 2 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे और स्कोर हो जाएगा 215 रन। तीसरे रन की मांग की थी और थ्रू पे, लेकिन इस बार नकारा, और 2 ही रन में संतुष्ट है गुरुनाथ। गुरु गौली, ये बहुत ही अच्छा मैच है क्योंकि हमें सेंचुरी देखने को मिली। सिंगल इस बार मुकम्मल किया। दूसरे रन की भी डिमांड है और इस बार बाउंड्री जाएगी, तो बाउंड्री के साथ स्कोर आगे पहुंचेगा। स्कोर हो चुका है 219। तो गुरु को ये आखिरकार बाउंड्री लेने में गुरु सफल हुए, और इसी बाउंड्री के साथ स्कोर हो चुका है 219। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है, और ये देखने लायक रहेगा किस तरह की आखिर की 3 गेंदें डालते हैं कौस्तुभ, क्योंकि अभी मौका है उनके पास। जो भी उनका बिगड़ा हुआ स्पेल है उसको वो ठीक करे, कम से कम रन दे, या फिर आखिर का विकेट लेने में टीम की सफल सहायता करे।
ये ऊंचा खेला है, गैप में बॉल जरूर जाएगा और 4 रन मिलेंगे। इसी 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 223। किस तरह से देखिए मितेश उनकी पीठ थपथपाते हुए। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की और तब ये इनिंग खत्म होगी। अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, समझ नहीं पाएंगे इनको। डॉट बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद पे। और ये आखिर की गेंद है इस इनिंग की। पूरी तरह से तैयार है गुरुनाथ, देखते हैं क्या करते हैं इस गेंद पे। ये देखिए कितना बढ़िया शॉट सिलेक्शन था। 1 रन यहाँ पे हासिल किया और 2 रन की मांग थी, तो 2 रन भी उन्होंने पूरे कर लिए हैं और सेफली 2 रन पूरे किए। इसी के साथ इनिंग की समाप्ति, 225 रन बना लिए हैं। 225, 226 का टारगेट। टारगेट 226, 225 बनाए।
120 गेंदों में बनाने हैं 226 रन। 225 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया है एवं योद्धास के सामने इनफाइनाइट ब्लास्टर्स की टीम ने। इनफाइनाइट ब्लास्टर्स की टीम ने ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है और अब आए हैं एवीएम योद्धास के चेतन कपूर और जावेद सिद्दीकी। पहली बॉल पे कट करने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद और डॉट बॉल। चेतन कपूर है स्ट्राइक पे। ओ नो, कैच छूटा है यहाँ पे और एक रन हासिल किया। और पहले ही यहाँ पे गलती कर दी है यहाँ पे विकेट कीपर ने। चेतन कपूर कप्तान को आउट करने का मौका था, वो गवा दिया है। और इस बार क्लास देखिए शॉट का, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। सीधा 4 रनों के लिए शानदार सा ये चौका। इसी चौके की बदौलत स्कोर हो चुका है 5 रन। डॉट गेंद इस बार जावेद सिद्दीकी, बहुत ही क्लासी बैट्समैन है। इस बार ऊंचा खेला है, गेंद जाएगी हवा में। फील्डर वहां पे मौजूद थे लेकिन नाकामयाब कोशिश और शानदार चौका मिलेगा। इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 9 रन। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। जावेद सिद्दीकी सेट ऑन फायर हम कह सकते हैं। 2 चौके उन्होंने झड़ दिए हैं अब तक। फिर एक बार मिसफील्ड है हुई है यहाँ पे और बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के करीब करीब। पकड़ लिया है और देखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कितने रन यहाँ पे पूरे किए। तो 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 11 रन। अब देखते हैं किसको बुलाते हैं गेंदबाजी के लिए। आशीष आए हैं इस बार, आशीष गंगवाल। और चेतन जो कि कप्तान है वो सामना करेंगे। सी के 25 नंबर की जर्सी उन्होंने पहनी है। ये देखना बहुत ही रोमांचकारी रहेगा किस तरह से ये एवीएम योद्धास की टीम ये टारगेट को चेस करती है।
वाइट बॉल का इशारा यहाँ पे अंपायर का। वाइट के साथ स्कोर बढ़ेगा, स्कोर हो जाएगा 12 रन। इस बार 1 रन के लिए खेला, स्कोर होगा 13 रन। जी हाँ, 13 रन हो चुके हैं यहाँ पे स्कोर कार्ड के ऊपर। सिंगल घेतला, जावेद आहे इस बार। इस बार बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये खूबसूरत सा चौका, इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 17 रन। इस बार हवा में खेला है, बॉल जाएगी सीधी 6 रनों के लिए। ये गवर चुप्पी छक्का। देखिए किस तरह से पिक किया था उन्होंने, और अंपायर ने अपना निर्णय पीछे लेते हुए बाउंड्रीज को घोषित किया है। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे जावेद। फिर एक बार कट किया और 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 22 रन। और जो कैच ड्रॉप हुआ था वो काफी दुखती रग होगी अगर ये जावेद कुछ ज्यादा खेल जाएंगे तो। इस बार फिर एक बार हवा में खेला है, फील्डर बॉल के नीचे आएंगे लेकिन बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और शानदार चौका, इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 26 रन। चेतन के बैट से ये स्ट्रोक निकला, चेतन जो कि कप्तान है, चेतन कपूर। और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है एवीएम योद्धास की टीम को अगर इस मुकाबले में उनको जीतना है तो। इस बार वेट किया और फिर ये बॉल को खेल दिया। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 27 रन, 27 रन। दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 27 रन। जीत के लिए अभी भी 108 गेंदों में बनाने हैं 199 रन। लगभग 11 के रन रेट से उनको पर ओवर रन बनाने हैं। ये काफी टफ रहेगा, लेकिन अगर ये जावेद और चेतन अगर ये दोनों ही बल्लेबाज अगर एक पार्टनरशिप बनाते हैं तो काफी हद तक आसान हो जाएगा। अब आए मुहिरा है इस बार,
मयूर घाग आए हैं और चेतन उनका सामना करेंगे। आते ही प्रहार करने की कोशिश और फील्डिंग वहां पे बहुत ही बढ़िया। तो 1 रन मिलेगा। स्कोर है 28 रन। तो 11.06 रनों की गति से इनको रन बनाने हैं एवं योद्धास की टीम को। तो उसी रन रेट को उनको कायम रखना पड़ेगा। इस बार ये देखिए फिर एक बार क्या छूटा। फील्डिंग बहुत ही चुस्त है यहाँ पे। कैच ड्रॉप होता उसके बाद थोड़ा संभाल के खेल रहे जावेद। और संभाल के खेलने की ज़रूरत है क्योंकि विकेट उनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर एक बार डॉट बॉल। तो लगातार डॉट गेंद भी सरदर्द हो सकती है बल्लेबाजों के लिए क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि उनको हर एक ओवर में एक बाउंड्री और नॉर्मली 5 रन तो कवर करने ही है। तो ये प्रेशर रहेगा बल्लेबाजों पे। 1 रन के लिए यहाँ पे खेल दिया है। फील्डर वहाँ पे मौजूद और केवल 1 रन मिलेगा। तो स्कोर हो चुका है 29 रन। 198 रनों की अभी भी ज़रूरत है। 198 रनों की ज़रूरत है अभी भी जीत के लिए। तो अभी जो जो फासला है लक्ष्य का और रनों का इसको जल्द से जल्द कम करना पड़ेगा। यहाँ पे अपील की है और आउट करा दे दिया अंपायर ने। रिप्ले जरूर देखेंगे हम किस तरह से। ये देखिए कितना सही निर्णय अंपायर द्वारा। और इसी के साथ चेतन कपूर को जो कि कप्तान है चलता किया काफी मायूस नजर आते हुए। केवल 8 रन बनाने में कामयाब रहे 7 गेंदों में। 114 का उनका स्ट्राइक रेट था लेकिन ये आंकड़े कुछ अलग होने चाहिए थे। अब इस बार देखने लगेगा कौन आता है नया बल्लेबाज। जीत का लक्ष्य अभी भी 103 गेंदों में बनाने 197 रन। अब 11.48 की गति से अभी रन बनाने हैं। रिक्वायर रन रेट अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। इस बार आए हैं नए बल्लेबाज। सौरभ आए सौरभ सिन्हा जो कि आज के दिन में इनका प्रदर्शन बहुत ही प्रशंसनीय रहा था। 5 विकेट उन्होंने चटकाए और एक मैच में 5 विकेट चटकाना मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि। सौरभ सिन्हा आया है। एक विकेट हाँ 3 ओवर।
अब जावेद सिद्दीकी है इस बार और सौरभ नाइन स्ट्राइक पे खेलेंगे। सिंगल यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है, 1 रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 30। गौतम गुरुनाथ है, दो ओवर के बाद जिन्होंने फील्डिंग के लिए आए थे, थोड़ा रेस्ट कर लिया था। डॉट बॉल इस बार, ये डॉट गेंदें लगातार सरदर्द बनने वाली है आगे जाके एवं दास की टीम के लिए। तो ये डॉट बॉल आपको जल्द से जल्द ये डॉट बॉल को सिंगल डबल में परिवर्तित करना है, तब जाके आपका ये लक्ष्य आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो रिक्वायर्ड रन ऑलरेडी 12 का है। सुपर सुपर बॉलिंग बाय गुरुनाथ, डॉट गेन अगेन। अब तक तो बांध के रखा है सौरभ को, 2 गेंदों का सामना किया सौरभ ने। इस बार पीछे की तरफ खेला था, लेट कट किया था और 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 31 रन, 31 रन। और अपील का शिकार हुए, यहाँ पे आउट करा दे दिया अंपायर ने। एलबीडब्ल्यू का शिकार हुए हैं जावेद सिद्दीकी, इस बार वापस जाएंगे। तो जो इनफॉर्म बैट्समैन थे दोनों ही, चेतन और जावेद, अब वापस जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी सफलता, 12 गेंदों में 21 रन बनाए, 4 शानदार चौके लगाए थे, 175 का जिनका स्ट्राइक रेट था और कंधे काफी झुके हुए हैं। अब आएंगे नए बल्लेबाज। दत्ताराम आए हैं इस बार, दत्ताराम, दत्ताराम परब है। इस ओवर की अभी भी 1 गेंद शेष है। फ्लिक किया यहाँ पे और आते ही चौका जड़ दिया है, ये खूबसूरत सा चौका। इसी चौके के साथ स्कोर हो चुका है 35 रन आफ्टर द एंड ऑफ 4 ओवर्स। 35। अभी भी बॉल बचे हैं 96 और बनाने हैं 191। अगर रिक्वायर रन रेट देखा जाए तो 12 का है, लगभग 11.94 का। मयूर आए है इस बार गेंदबाजी के लिए, मयूर घाक, और सौरभ सिन्हा उनका सामना करेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा।
और ये बहुत ही लंबी वाइड। Score moves to 36 through this wide. डॉट बॉल का इशारा है यहाँ पे अंपायर का। इस बार पीछे की तरफ खेला है 4 रनों के लिए। देखिए किस तरह से बॉल को पीछे की तरफ धकेल दिया। बॉल लेग साइड पे जा रही थी, उसको टच किया और 4 रन हासिल किए। सौरभ सिन्हा के बैट से ये 4 रन आएंगे। स्कोर मूव्स टू 40 रन। अपील की है इस बार, लेकिन नकारा अंपायर ने। डॉट गेंद का इशारा है अंपायर द्वारा। सौरभ सिन्हा। फिर एक बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल। स्कोर है 40 रन। डेड बॉल। तैयार नहीं थे बैट्समैन। इस बार ऊंचा खेला है, बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और ये मिलेंगे 4 रन। So through this 4, score moves to 44 run. सौरभ सिन्हा अब आक्रमण कर रहे हैं और जिसकी जरूरत है टीम को। फिर एक बार उसी दिशा में खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया प्रयास यहाँ पे फील्डर द्वारा। और 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। और ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
सौरभ आए हैं फिर एक बार। गुरुनाथ आए हैं। गुरुनाथ। वाइट बॉल का इशारा यहाँ पे अंपायर द्वारा। स्क्वायर कट का ये खूबसूरत सा फटका। 4 रन मिलेंगे, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। और इसी 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 50 रन। 50 रन हो चुके हैं। White ball this time. Score moves to 51. ये बहुत ही खूबसूरत शॉट था, आगे की तरफ खेला और 1 रन हासिल किया। स्कोर है 52 रन। फिफ्टी टू रन हो चुके हैं और बॉल भी है 5.2। पीछे की तरफ खेला, कोई रन नहीं। डॉट बॉल यहाँ पे। स्कोर रिमेन सेम, स्कोर है 52। Now equation is 87 balls and run required 174. It's a no ball और ये नो बॉल के साथ स्कोर हो जाएगा 53 रन। ये देखिए प्लेसमेंट कितना बढ़िया, लेकिन फील्डर वहाँ पे मौजूद है तो केवल 1 रन मिलेगा। और सिंगल डबल से अब आगे बढ़ते हुए स्कोर है 54। तो अब तक बहुत बढ़िया चेस कर रहे हैं, केवल 1-2 रन पीछे है। 9.53 का करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड रन रेट है 12 का। तो 1-2 छगे या फिर बाउंड्रीज ये रन रेट मैच कर पाएगी, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट है। अपील किए यहाँ पे और अंपायर ने नकारा इस अपील को। सौरभ सिन्हा के लिए अपील थी। सौरभ सिन्हा जो कि बहुत ही ऑलराउंडर है, जिन्होंने ऑलरेडी 5 विकेट चटका चुके है इसी मैच में और अब बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार ऊंचा खेला ये थोड़ा सा और फिर एक बार 1 रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है 55 रन। सो 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर है 55।
आशीष आया है इस बार गेंदबाजी के लिए। आशीष गंगवाल। डॉट बॉल। अपील की है इस बार और फिर एक बार एक लेने में कामयाब। और लेग बाइस का इशारा अंपायर द्वारा। लेग बाइस के साथ स्कोर एक से बढ़ेगा, स्कोर हो जाएगा 56 रन। काफ़ी धीमा चल रहा है अभी ये मैच। अंपायर काफ़ी मायूस है। उनकी रिक्वेस्ट है दोनों टीम से कि जल्द से जल्द वो मैच का स्पीड बढ़ाए और ये मैच को ख़त्म करे। इस बार आगे की तरफ खेला, फील्डर वहाँ पे तैनात है तो केवल 1 रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है 57 रन। मितेश पटेल आए हैं इस बार गेंदबाजी के लिए 8वां ओवर लेके। और 7 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 60 रन और विकेट गंवाए है 2। और जीत का अगर लक्ष्य देखा जाए तो अभी भी बनाने हैं जो गेंदें बची है। अगर जीत का लक्ष्य देखा जाए तो अभी भी जीत के लिए बनाने हैं 78 गेंदों में 166 रन, मीन्स 78 बॉल एंड रिक्वायर्ड 166। required run rate per over is 12.77, is almost 13।
मितेश पटेल आए हैं और सौरभ सिन्हा उनका सामना करेंगे। अब गेंदबाजी में थोड़ी सी बदलाव लाया है कप्तान ने। सौरभ सिन्हा, देखते हैं किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता है। ऑलरेडी उन्होंने 5 विकेट झटका है और अगर चकमा दे दिया है इस बार सौरभ को, गेंद को समझ नहीं पाए और डॉट बॉल यहाँ पे। एक रन फिर एक बार हासिल किया यहाँ पे सौरभ ने और एक रन के साथ स्कोर बढ़ेगा। स्कोर हो चुका है 61 रन। अब धीमी हो चुकी है एमएम योद्धा की ये गाड़ी, तो एमएम योद्धा की गाड़ी को अभी गियर बदलना पड़ेगा क्योंकि उनके जावेद चेतन कपूर जो कि ओपनिंग बल्लेबाज थे जो पवेलियन में लौट चुके हैं। और ये हमारे साथ जुड़े हैं केदार रानड़े। पिछले मैच में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा था। अभी वो मैच का आनंद उठा रहे हैं अपने गॉगल लगाते हुए। समझ में नहीं आता वेदर मैच देख रहे हैं या फिर नींद ले रहे। खराब गेंद यहाँ पे, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। तब ये वाइड अभी बोनस के रूप में आएंगे एवीएम योद्धा के खाते में। डॉट बॉल दिस टाइम। अभी भी 2 गेंदें शेष है इस ओवर की। स्कोर हो चुका है 62 रन, 62 रन और विकेट गई है 2। अब यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। 13.44 का है। 12 इस बार पीछे की तरफ धकेल दिया है और ये खूबसूरत सा चौका मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत थी। ये देखिए किस तरह से देखा और लेट कट किया और पीछे की तरफ खेला है और 4 रन हासिल किए। ये दत्ता राम परब की बैट से ये निकला खूबसूरत सा चौका। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। 66 रन हो चुके हैं। आठ ओवर जारी है। फिर एक बार जबरदस्त कट शॉट खेला है और फिर एक बार 4 रन मिलेंगे। तब ये लगातार 2 बाउंड्री की बदौलत स्कोर हो चुका है 70 रन। 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 70 और ये अच्छा ओवर रहा है एवरेज के लिए। अभी भी जीत के लिए 72 गेंदों में बना है 156 रन। तो जीत का लक्ष्य अभी भी बहुत बड़ा है। यहाँ से विकेटों को संभाल कर खेलना पड़ेगा और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा क्योंकि अभी करंट रन रेट अगर देखा जाए तो है 8.75 का। आशीष गंगवार है फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। अभी भी 12 ओवर का खेल बाकी है। 12 ओवर में कुछ भी हो सकता है। विदर ए दस की टीम
डॉट बॉल अगेन। सिंगल रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन की मांग है। थ्रो बहुत ही बढ़िया, लेकिन फील्डर पहुंचेंगे। 2 रन के साथ स्कोर होगा 72 रन, 72 रन। सौरभ सिन्हा है स्ट्राइक पे। अब रिक्स उठाना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा बड़े शॉट के लिए। कट करने की कोशिश की और बॉल जाएगी सीधा पीछे बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 76। और बल्लेबाज काफ़ी खुश, क्योंकि कैसी भी आए लेकिन रन आए, यही स्ट्रैटेजी रहेगी अभी एवीएम योद्धास की। तो इसी 4 रनों के साथ स्कोर हुआ है 76 रन। 25 गेंद रनों पे खेल रहे हैं सौरभ सिन्हा। ये मैच अगर जीतती है एवीएम योद्धास की टीम तो मैन ऑफ द मैच बनेंगे, और अगर हारती है तो स्टाइलिश प्लेयर रहेंगे, ये तो लगभग तय है। अभी भी 150 रन बनाने हैं 69 गेंदों में। और आसानी के साथ फिर एक बार सिंगल कंप्लीट किया है। स्कोर हुआ है 77। और क्लीन बोल्ड। दत्ताराम को वापिस जाना पड़ेगा। और विकेट का पतन होते हुए यहाँ पे दत्ताराम परब को चलता किया है। 12 गेंदों में उन्होंने बनाए 15 रन। 3 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई। और आए हैं नए बल्लेबाज शिवा। शिवानंदन कोनार।
फिर एक बार मैच को शुरुआत होगी। शिवा आए हैं इस बार एज अ बैट्समैन, और आते ही खूबसूरत सा चौका दिला दिया है अपने टीम के लिए। और ये बढ़िया बैटिंग। मितेश पटेल आए हैं नए बल्लेबाज। सौरभ सिन्हा आप आए हैं स्ट्राइक पे। 81। सिंगल लेने की नाकामयाब कोशिश, डॉट बॉल। बैट का ऊपरी हिस्सा लगा और एक रन हासिल किया। स्कोर है 82 रन। अब शिवा आए हैं स्ट्राइक पे। शिवानंदन कोणार। इस बार ऊंचा खेला है ये शॉट, बहुत ही बढ़िया गैप क्लियर किया है और 4 रन मिलेंगे। इसी 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 86 रन। शिवा इन्होंने अब तक केवल 2 गेंदें खेली और 2 गेंदों में 2 चौके जड़ दिए हैं, तो आते ही फॉर्म में नजर आते हुए। फिर एक बार कड़ा तगड़ा प्रहार किया है, 1 रन मिलेगा। स्कोर हो चुका है 87। एक रन के लिए खेला और स्कोर है 88। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की। डॉट बॉल दिस टाइम एंड आफ्टर द एंड ऑफ 10 ओवर्स स्कोर है 88 रन। 88। इस ओवर में 2 शानदार शॉट खेले थे, तो स्कोर है 88 रन। जीत के लिए अभी भी 60 गेंदों में बनाने 138 रन। अब रिक्वायर्ड रन रेट है पर ओवर 13.8 का।
और करंट रन रेट चल रहा है 8.8 का। तो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट का जो फासला है इसको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए ये दोनों ही बल्लेबाजों को, ताकि बॉल टू रन बने या फिर ऑल टू जो इक्वेशन वो कम से कम रहा जाए बाद, ताकि आखिर की ओवर में आसानी के साथ उसे चेस कर पाए। शरद है इस बार, शरद सुवर्णा। सौरभ सिन्हा है स्ट्राइक पे। 11 और अभी में जारी है। इस बार ट्रैवलिंग की तरफ खेला है और 4 रन मिलेंगे। इसी 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 92 रन्स। शरद के बॉलिंग के ऊपर आते ही प्रहार कर दिया है सौरभ ने, और अपनी रनों की भूख कितनी है ये दिखाते हुए सौरभ सिन्हा, और जरूरत भी है टीम के लिए। फिर एक बार उसी दिशा में खेला है, लेकिन फील्डर इस बार तैनात है वहां पे और केवल 1 रन मिलेगा। और इस बार शिवा आए स्ट्राइक पे। जेपीएससी के जो ओनर है घाटकोपर जॉली जिम खाना जो चलाते हैं, फातिमा क्रिकेट ग्राउंड, माफ कीजिएगा, उनका फातिमा क्रिकेट ग्राउंड है। इस बार ऊंचा खेला है, बॉल जाएगी सीधा हाथ में और यहाँ पे विकेट का पतन। और यहाँ पे ये खूबसूरत सा कैच लिया है। योगेश ने खूबसूरत सा कैच पकड़ लिया है और शिवा को आउट होना पड़ेगा। अब आ गए हैं नए बल्लेबाज। सौरभ सिन्हा ने इस बार हवा में उछाल दिया है बॉल 1 रन के लिए। एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 94।
और ये देखिए यहाँ पे फिर एक बार विकेट। यस, कुशल को यहाँ पे चलता किया है यहाँ पे। इन स्विंग हुई बॉल और आउट हो चुके हैं कुशल। कुशल अपना बिना खाता खुले वापिस चले। शरद ने उनको चलता किया और इस ओवर में दो महत्वपूर्ण सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए शरद ने। एक शिवा और दूसरा कुशल। अब देखते हैं नए बल्लेबाज कौन जाते हैं। अमर आए हैं इस बार गेंदबाजी के लिए। माफ कीजिएगा, बल्लेबाजी के लिए। और 11 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 94। सुब्रमण्यम आए हैं। सुधांश सुब्रमण्यम। सुंदरेश सुब्रमण्यम। और रिप्ले देखेंगे हम यहाँ पे। तो सुंदरेश सुब्रमण्यम है, इन्होंने आती ही सफलता दिला दी अपनी टीम के लिए। और शरद ने खूबसूरत सा कैच लपेट लिया है और चलता किया सौरभ सिन्हा को, जो कि बहुत ही सफल रहे थे अब तक आज के दिन में। और काफ़ी निराशा अभी एवं उदास के खेमे में, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन थे सौरभ सिन्हा जो कि आउट हुए हैं और उनको चलता किया है सुंदरेश ने। अब उनकी जगह लेने के लिए जाएंगे नहीं बोले। 30 गेंदों में इन्होंने बनाए 34 रन, 5 फोर लगाए। 113 का उनका स्ट्राइक रेट था। अब सिद्धार्थ आए हैं नए बल्लेबाज।
डॉट बॉल है ये टाइम पे। वाइड गेंद का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर है 95 रन। दो वाइड के बाद ये खूबसूरत सी गेंद। डॉट बॉल सिद्धार्थ। एक रन यहाँ पे हासिल किया। पचास गेंदों में अभी भी 129 रनों की जरूरत है। अब हर बॉल पे 5 रनों की जरूरत है लगभग। रिक्वायर्ड रन काफी बढ़ चुका है। दबाव महसूस करे एवं 10 की टीम। 6 विकेट उनके गए हैं। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। इस नो बॉल के साथ स्कोर हो चुका है 99। डॉट बॉल है दिस टाइम। 12 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 99। डॉट बॉल दिस टाइम। चल रहे हैं मेरा। डॉट बॉल। मोबाइल दे। डॉट बॉल अगेन। कॉल बैक करना पड़ेगा। हाँ। एक रन यहाँ पे हासिल किया है। और 100 रन यहाँ पे पूरे हुए एवं योद्धास की टीम के। डॉट बॉल दिस टाइम। इस ओवर की अभी भी एक गेंद शेष है। एक रन के लिए खेला है। स्कोर हुआ है 101, 101।
वैलिड गेंद है ये, अच्छी गेंद। इस बार आगे की तरफ खिला है, एक रन हासिल किया है, दूसरे रन की कोशिश नहीं। स्कोर हो चुका है 102 रन्स। जो मैच चालू है, कॉल बैक कर। फिर एक बार डॉट गेंद। अब केवल अब केवल औपचारिकता रह चुकी है इस मैच में। डॉट गेंद अगेन। एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। स्कोर है 103 रन। और ओवर की समाप्ति 14 ओवर के बाद, समाप्ति के बाद स्कोर है 103, 103 रन। और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। इसी 4 के साथ स्कोर हो चुका है 107 रन। अमर के डॉट बॉल अगेन। डॉट गेंद है इस बार। अगेन डॉट बॉल। 107 रन हो चुके हैं।
2 रन देखते ही देखते हासिल कर लिए। यहाँ पे 109 हो चुका है स्कोर। माफ कीजिएगा, हमारे कौशिक जी बता रहे हैं केवल 1 रन मिला है यहाँ पे, तो स्कोर है 108 रन। और थ्रू दिस सिंगल स्कोर मूव्स टू 109 रन। 23 23 रन बना है अब पर ओवर। हर बॉल ओवर में 4 छक्कों की जरूरत। डॉट बॉल दिस टाइम। अभी काटेगी नहीं बल्कि किल की तरह चुभेगी ये डॉट। और इन्होंने शायद अभी आशा छोड़ दी है एवं योद्धास की टीम ने, क्योंकि उनके 6 विकेट गए हैं। और अब यहाँ से कोई चमत्कार ही उनको बचा सकता है। कौशिक जी, आपको क्या लगता है क्या होगा अभी यहाँ से? जी हाँ, बिल्कुल सही कौशिक जी, आप बोल रहे हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन इन दिस गेम। यहाँ से भी अमर में एनर्जी आ सकती है। जो नॉन स्ट्राइकर है सौरभ, जो कि आउट हुए। और ये देखिए यहाँ पे एनर्जी किसी और को आ गई। विकेट मिला है यहाँ पे। बोल्ड हो गए हैं यहाँ पे और वापिस जाना पड़ेगा। अमर को वापिस जाना पड़ेगा। 8 रन बनाए उन्होंने 17 गेंदों में। अब जाएंगे नए बल्लेबाज। कौन है पता है? 7 विकेटों का पतन हो चुका है। 16 और 110। ये वाइड बॉल है, वाइड करा दे दिया एम्पायर ने। और वाइड के साथ स्कोर हो चुका है 111। इक्का इक्का और इक्का। इस बार उठा के खेलने की कोशिश। केवल 1 रन मिलेगा और स्कोर हो चुका है 112। तेईस गेंदों में बना है 114 रन। अब यहाँ पे कोई मिरेकल भी नहीं हो सकता। कोशिश जी, आपको क्या लगता है कोई मिरेकल यहाँ पे होगा? अब मैच का बस रिजल्ट ही सामने आएगा। और सीधे पैर पे जाके लगी है। अपील की है लेकिन नकारा अंपायर ने। तो स्कोर है 112 रन। अब ये सिचुएशन में अगर आप बल्लेबाजी के लिए होते तो आप क्या करते कौशिक? जी हाँ, कौशिक बोल रहे मैं लंबे लंबे हिट लगाने की कोशिश करता। डॉट बॉल अगेन। उठाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे।
और ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे, डॉट गेन है यहाँ पे। और ओवर की समाप्ति स्कोर है 112 रन आफ्टर द एंड ऑफ 17 ओवर। अठारह गेंद में चाहिए 114 रन। सिंगल। डॉट बॉल। और ये देखते हैं रिप्ले में क्या हुआ ये यहाँ पे। और ये बोल्ड हो गए हैं, 8वें विकेट का पतन होते हुए यहाँ पे। क्या, और अभी औपचारिकता बची इस मैच में। महेश भिवानी आउट हो चुके हैं। अब जा रहे हैं लास्ट बल्लेबाज कौस्तुभ। एक सौ तेरह रन है 18 ओवर के बाद। 2 ओवर 56.50 का रिक्वायर्ड रन रेट है। सिंगल रन कंसिडर।
स्कोर है 114। डॉट बॉल। सिंगल आ है इस बार। और जिसका सब्री बेसब्री से कौशिक वेट कर रहे थे, वो घड़ी यहाँ पे आ चुकी है। ये मैच खत्म हो चुकी है। मितेश ने एक खूबसूरत सा कैच लपेट लिया। और एवीएम योद्धा का एक प्लेयर शॉट होने की वजह से यहाँ पे टीम को ऑल आउट घोषित किया जाएगा। और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है 110 रनों से इनफाइनाइट ब्लास्टर्स की टीम ने। दोनों टीमों का मैं स्वागत करना चाहूंगा।
Good evening, everyone. This is a wonderful match between Infinite Blasters and AVM Yodhas. And Infinite Blasters are the winners. I would like to call upon Mr. Vikrant sir to first give away Player of the Match award. Player of the Match award to Mr. Saurabh Sinha for his wonderful 5 wickets. Bande, 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 bande. अरे तू चश्मा में तो देख तेरा काम का नहीं है ना वैसे Congrats, Saurabh. Now I'd like to call upon Mr. Javed sir to give the award for Man of the Match, and no marks for gazing here. Mr. Yogesh, please come forward for a wonderful 100. Well played, yaar. Thank you. Congratulations. Thank you. Congratulations, everyone, and well played. That's what we all have from here now. Good night. Thank you very much.